Hello, beta. Good evening, everyone. So today we are going to go ahead and start our analysis with discrete goods. What are discrete goods? Those goods which can only be measured in, so I cannot write them in decimals. I can only write them in numbers and not decimals. Just for example, but I can say that either you have one car or two car, right? या तो one car होगा या तो two car होगा. You cannot have 1.1 car. You cannot have 1.4 cars, है ना? So car is cannot be described in continuous units. कार को हम कंटिन्यूअस यूनिट्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकते. वी कैन नॉट डिस्क्राइब कार इन कंटिन्यूअस यूनिट्स. ईदर कार विल बी वन कार और टू कार, नॉट फोर कार, नॉट 10 कार, आई मीन नॉट 4.1 कार, नॉट 10.5 कार्स, है ना? सो दोज गुड्स विच कैन only be described in integer values, not in decimal values, जिनको हम सिर्फ integer में लिख सकते हैं पर हम decimal में नहीं लिख सकते हैं, they are called as discrete goods. उनको क्या बोल दिया जाता है? They are called as discrete goods. Am I clear with this part, beta? ठीक है. Now in this case, what will happen is I will use the concept of composite good. तो हम good 1 को x1 represents quantity of good 1 बेटा. और ये जो हमारा good 1 है ना, this good 1 is a discrete good. So I am taking good 1 as a discrete good और माने ये सिर्फ integers में ही available होगा. And then I am taking x2. This represents quantity of good 2. And beta this is available. ये good 2 को हम कैसे define करें? Money spent on all other goods. जैसे हमने composite good define किया था, money spent on all other goods. ठीक है. Now we need to go ahead and we need to make indifference curve for such goods. ठीक है बेटा. So let us try to just represent this using an IC curve format. So on the x-axis, I am taking good 1. Good 1 को मान लेते हैं car. It's a discrete good. And on the y-axis, good 2. Good 2 is income spent on all goods other than car. Income is a continuous commodity. समझने की कोशिश करो. पैसा continuous होता है. Income is continuous. क्यों income continuous है बेटा? क्योंकि income can be 5 rupees also, 5.5 rupees also, 5.7 rupees also, 5 rupees 70 पैसा, 5 rupees 80 पैसा. समझ रहे हो ना? तो income is a continuous good. तो good 2 तो continuous है, बट गुड 1 जो है वो हमारा एक डिस्क्रीट गुड है, वो सिर्फ नंबर्स में ही मेजर हो सकता है. नाउ हाउ डू आई शो इंडिफरेंस कर्व ऑफ सच गुड्स? ठीक है, तो देखो ध्यान से. आई एम मेकिंग इंडिफरेंस कर्व. ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए. पॉइंट ए रिप्रेजेंट करता है जीरो कार एंड ऑल मनी ऑन अदर गुड्स.
आई एम जस्ट कंज्यूमिंग अदर गुड्स, मैंने एक भी कार कंज्यूम नहीं किया, आई एम स्पेंडिंग ऑल मनी ऑन द अदर गुड्स। फिर बेटा यहाँ पे आई हैव वन कार विद मी सपोज, और ये कोई एक पॉइंट आ गया, पॉइंट बी। तो जैसे ही हमने कार को खरीदा, एज आई इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ कार, तो यूटिलिटी सेम रखने के लिए व्हेन यू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी टू कीप द यूटिलिटी अनचेंज्ड, यू शुड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी। बोथ गुड्स आर गुड गुड्स, दोनों ही गुड्स गुड गुड्स हैं। तो अगर हमने कार का कंजम्पशन बढ़ाया, गुड वन का कंजम्पशन बढ़ाया, तो गुड टू का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा ना, टू होल्ड यूटिलिटी अनचेंज्ड, टू ड्रॉ एन इंडिफरेंस कर्व। सो पॉइंट बी इज अ लिटिल लोअर। आई एम रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स, मैंने दूसरे गुड्स का कंजम्पशन कम कर दिया। आई एम इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ कार एंड आई एम रीचिंग पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी इज वन कार एंड कुछ क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स, सम मनी ऑन अदर गुड्स। फिर बेटा देखो पॉइंट सी, पॉइंट सी क्या है, आई हैव टू कार्स, सो अगेन आई एम इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ कार्स टू होल्ड यूटिलिटी कांस्टेंट। अगर मुझे यूटिलिटी को कांस्टेंट रखना है और मैं कार्स का कंजम्पशन बढ़ा रही हूं, आई शुड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स। तो बाकी गुड्स पे कम पैसा खर्च होगा, आई मस्ट डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स। तो पॉइंट सी, आई एम इंक्रीजिंग कार फ्रॉम 1 to 2। बीच वाले पॉइंट्स दे आर नॉट कंज्यूमेबल, आई कैन नॉट हैव 1.1 कार, 1.4 कार, 1.6 कार, दैट इज नॉट देयर, आई डोंट हैव दोज बंडल्स विद मी, right? So either it is one car or it is two cars. ठीक है, so how do I draw an indifference curve for these points beta? By representing dotted line. So dotted point represent that this is not line, line नहीं है ये, this is actually मेरे को indifference curve. So if you just compare it with the continuous good indifference curve beta, तो continuous good indifference curve क्या बोलता है? A well-defined indifference curve looks like this. ऐसा होता है ना, convex. This is good 1, this is good 2, कुछ ऐसा दिखता है, well-defined indifference curve. What happens beta? When you go from point A to point B, you increase good 1, utility increases, you decrease good 2, utility decreases, over and above utility remains unchanged. That is why they are on the same indifference curve, इसीलिए वो same IC पर है. Now what has happened is that point A, suppose it represents one car. Suppose point B is representing two car beta. Suppose there is point C which represents three car. तो जैसे ही ये discrete good case हुआ, the moment it has become discrete good case, तो ये point A और बीच के जो points हैं, the points in between A and B, they are not affordable, they are not available to the consumer. Right? It's not about affordability, it's about the fact that these bundles are not available. क्योंकि suppose let's say a bundle D tells me that there is 1.5 car, but can I have 1.5 cars? क्या 1.5 cars हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना. So point D is not a point which we are talking about, isn't it? So therefore any point between A and B is not available to the consumer. तो हम यहाँ पे we will represent it with dotted point. Point A and B, point between B and C, these are not available only to consumer. Like this. Same here. Between, so suppose this point is 0 beta, 0 car. Between 0 and A, no point is available to the consumer. So I cannot have that like this. And something like this will be there. Are you understanding? So it will cut the axis. Axis ko to, axes are possible. I can have 0 car. You know, maybe here also I can have maximum 4 cars. Axis is possible, but points in between are not possible. तो जब हम ऐसा कर देते हैं वो discrete good बन जाता है. Is this making some sense?
तो क्या बोल रहा है डिस्क्रीट कोड कि या तो 0 कार हो, या 1 कार हो, या 2 कार हो, या 3 हो, या 4 हो, बट इनके बीच के पॉइंट्स नहीं हो सकते। either you will have 0 car, 1 car, 2 car, 3 car or 4 car, but you cannot have points in between, you cannot have these points, ये points नहीं हो सकते। and since you cannot have these points, क्योंकि ये points हो ही नहीं सकते हैं, the indifference curve is just these dots, हाँ? and utility from point A, B, C is equal, ये सारे पॉइंट्स पे यूटिलिटी सेम है बिकॉज दे आर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। क्लियर हुई ये बात? ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस नाउ। ठीक है, सो यू विल राइट इट विद मी, प्लीज राइट इट विद मी बेटा। राइट, गुड वन is only available in integer amounts. The dashed line connect together the bundles that the consumer is indifferent. तो ये जो बंडल्स है जिसे ये डैश्ड लाइन कनेक्ट कर रही है, द लाइन दैट कनेक्ट्स दीज पॉइंट्स, आई एम सेइंग दैट यूटिलिटी फ्रॉम बंडल ए, बी एंड सी इज सेम, तभी तो ये एक इंडिफरेंस कर्व पे हैं। ए, बी और सी के बीच में कंज्यूमर इंडिफरेंट है, कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन ए, बी एंड सी। क्लियर? अच्छा, नाउ इफ आई आस्क यू दैट प्लॉट indifference map, तो indifference map means what beta? Many indifference curves। Indifference map means what? Many indifference curve। तो now I need to go ahead and I need to show multiple indifference curves together। अब मुझे बहुत सारे indifference curve बना के दिखाने पड़ेंगे, तब उसे हम indifference curve map बोलेंगे। We will call that as an indifference curve map। So let us try to just plot that। This is good 2, good 1 बेटा। सपोज यहां पे है 1 यूनिट और ये है 2 यूनिट। दिस इज माई इंडिफरेंस कर्व 1, ये 2 ले लेते हैं। ठीक है, फिर ज्यादा यूटिलिटी के लिए क्या चाहिए होगा? द हायर द इंडिफरेंस कर्व द मोर द यूटिलिटी। लेट्स ड्रॉ एन हायर इंडिफरेंस कर्व। दिस गिव्स मी मोर यूटिलिटी। देन ड्रॉ अ हायर इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ कार, 2 यूनिट्स ऑफ कार है। So simply we are saying that higher indifference curve, more utility। तो ये हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। क्लियर बेटा? ठीक है जी। सो नाउ व्हाट यू कैन गो अहेड एंड डू इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट वीकली preferred set for this consumer। प्लॉट वीकली प्रेफर्ड सेट या वीकली प्रेफर्ड बंडल ऑफ दिस कंज्यूमर। तो बेटा व्हाट इज वीकली प्रेफर्ड सेट? क्या था वीकली प्रेफर्ड सेट? वीकली प्रेफर्ड सेट हैज 2 पॉइंट्स इन इट। 2 तरीके के पॉइंट्स आते हैं वीकली प्रेफर्ड सेट में। वन इन विच
consumer is indifferent. And second, those points which consumer prefers. बेटा अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो प्लीज पुराने लेक्चर्स को पहले हमें देखना है। वीकली प्रेफर्ड सेट वो सेट था जिसमें वो सारे बंडल्स थे जिसमें कंज्यूमर इंडिफरेंट था, या वो पॉइंट्स जिनको कंज्यूमर उस बंडल के ऊपर प्रेफर कर रहा था। So if I say that X is weakly preferred to Y, it can mean two things. Either X is preferred to Y or you are indifferent between X and Y. These 2 points together, bache, they form the weakly preferred set. Please try to understand first. Remember the concepts well. पुराने concepts भूलने नहीं हैं, उनको रिवाइज करते हुए आगे चलना है। ठीक है, we don't have to forget the old concepts. Keep revising. तो अब देखो, if I draw this indifference curve, एक IC बना लेते हैं यहाँ पे, point A. Why am I doing dotted line बेटा? क्योंकि it is a discrete good. Point B, point C. This is an indifference curve. So weakly preferred set means what? Those point between which I am indifferent. तो indifferent कहाँ पे हूँ? Point A, B और C पे. These are indifferent to each other. A, B and C पे मैं indifferent हूँ. I am indifferent between these points. And which point will be preferred over A? A के ऊपर कौन से point को preference मिलेगा? Whichever has more amount as compared to A. Whichever has more amount as compared to A. That means these points, beta. Anything above A. Which point will be preferred over B? Whichever has more as compared to B. That means these points. Anything above B. Which point will have more than C? किसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे C के ऊपर? वो सारे बंडल जिनमें C से ज्यादा अमाउंट है कंजम्पशन के लिए. That means anything above C. है ना? So suppose compare this beta. This tells me 1 car and 40 rupees on other goods. और यहां पे एक पॉइंट है जो बोलता है 1 कार एंड 70 रुपीज ऑन अदर गुड्स. तो ये जो पॉइंट डी है, दिस पॉइंट डी विच इज 1 कार एंड 70 रुपीज ऑन अदर गुड्स, एंड ये जो पॉइंट बी है विच इज 1 कार एंड 40 रुपीज ऑन अदर गुड्स. तो बेटा क्लियरली डी इज preferred over B, isn't it? D is preferred over B. So D will lie in weakly preferred set. Am I clear with it? D will lie in weakly preferred set. है ना? तो please write down. लिखो मेरे साथ बैठ के. The vertical line represent the bundles that are at least as good as the indicated bundle. तो ये जो हमारा बंडल है, इसके ऊपर जो भी बंडल्स आएंगे, ऑल बंडल्स दैट लाई अबव पॉइंट बी आर इन फैक्ट प्रेफर्ड ओवर बी, right? So they will lie in the weakly preferred set of B. Am I clear? They will lie in the weakly preferred set of B. Okay. In the next class, we will take in detail the features of well-defined preferences. Well-defined preferences को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके बेटा? ओके, थैंक यू बेटा.